कौन कभी अनुमान लगा सकता है कि गांधी जी ने एक ऐसे उद्योग को शुरू करने में हेल्प की जिसका भ्रष्टाचार आज भी हम सभी को परेशान कर रहा है, साथ ही साथ आम लोग इसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं। तो आइए इस दवा फार्म इंडस्ट्री की काली सच्चाई को समझते हैं। Early 1960s, the pharmaceutical company behind the drug thalidomide tried to convince Dr. Francis Kelsey, a scientist from the Food and Drugs Administration, to approve their drug. A stubborn stickler of a medical officer in the Food and Drug Administration, Dr. Francis Kelsey. 1935 में भारत के लोगों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हो, इसके लिए भारत को पश्चिमी दवाओं की नकल करे, और वह नकल करने वाली पहली कंपनी थी सिप्ला। यह जल्द ही इस रिवर्स इंजीनियरिंग ड्रग में फार्मूला में माहिर हो गया और मध्य शताब्दी तक यह भारत और अन्य देशों को महत्वपूर्ण पश्चिमी दवाओं को लो कॉस्ट वर्जन की मेडिसिन को सप्लाई करने लगा था। कंपनी सिप्ला बेसिकली जेनेरिक दवाइयाँ बनाती थी। जेनेरिक दवाइयाँ वो होती है जिनका कोई अपना ब्रांड नेम नहीं होता है, वह अपने शॉर्ट नेम से मार्केट में जानी पहचानी जाती है। जेनेरिक दवाइयाँ ब्रांड नाम वाली दवाइयों से सस्ते होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बनाने वाली कंपनी को इसे विकसित करने और विपणन करने में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जब यूएसए ने 1980 के दशक में जेनेरिक दवाइयों का आयात अनुमति दिया तो सिप्ला और जो भी कंपनी जेनेरिक दवाइयाँ बनाती थी वह बिग फार्मा में हीरो बन गए। यह प्रशंसा और बढ़ गई जब सिप्ला ने 2000 के दशक में हमारी कंपनी एक HIV दवा उपलब्ध कराएगा जिसकी कीमत लगभग $1 प्रतिदिन होगी। बिग फार्मा की कीमत का लगभग 4% है उन लाखों अफ्रीका लोगों को जो अन्यथा बिना इलाज के रह जाते थे। सिप्ला कंपनी जेनेरिक दवाइयों के मामले में विश्व में फेमस थी। वह अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ निर्माण करती थी और साथ ही साथ सस्ती भी होती थी ताकि गरीब लोग भी इसे आसानी से खरीद सकते थे। सिप्ला कंपनी गरीबों का मसीहा मानते थे। सिप्ला ही कंपनी थी जिससे लाखों अफ्रीकी लोगों का इलाज कुछ चंद पैसों में हो जाते थे। लेकिन एक कहावत है कि फेमस होने के बाद लोग आपकी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। यही हुआ जेनेरिक निर्माता कंपनी सिप्ला के साथ। देखा देखी में कई जेनेरिक उद्योग और बढ़ने लगे और दवाइयों को जल्दी और गंदे तरीके से बनाकर रेगुलेटर्स को मूर्ख बनाने के लिए वैधता का दिखावा करके रोगियों को नुकसान पहुँचा रहा है और कभी कभी तो जान भी ले रहा है। यह तेज़ी से बढ़ता उद्योग जिसका अधिकांश उत्पादन भारत और चीन में हल्के विनियमित संयंत्रों से होता है, दुनिया के हर कोने में बेखबर रोगियों को खराब दवाएं दे रहा है। लिखा गया महाकाव्य यह दिखाता है कि कैसे बिग फार्मा यानी सिप्ला कंपनी का मुकाबला करने के लिए स्थापित एक उद्योग जब असहज रूप से उसके साथ विलय कर रहा है, जिससे एक दो मुहा राक्षस पैदा हो रहा है जिसके जाल में असहाय, पीड़ित और संभावित रेगुलेटर दोनों फंस गए हैं। इस बिग फार्मा कंपनी का उजागर करने के लिए एक और केस आया। भारतीय जेनेरिक्स की दिग्गज कंपनी रैनबक्सी लेबोरेटरीज का। Generic drugs, 40% of drugs are now made overseas in countries like China and India, where U.S. oversight is weaker. Senior correspondent John Miller has been looking at one of those companies called Ranbaxy. John, good morning. Good morning, Charlie and Nora. Dinesh Thakur and काली सच्चाई को उजागर करने वाले थे दिनेश ठाकुर। दरअसल दिनेश ठाकुर एक युवा इंजीनियर थे और रैनबक्सी लेबोरेटरीज में उन्हें रोजगार देती है। कंपनी में बन रहे लापरवाही से दवा निर्माण को जारी रखने और रोकने की कोशिश भी करता है। जब ठाकुर को पता चलता है कि रैनबक्सी ने इस मामले को छुपाया है तो वह डर जाता है। उसका डर तब तो गुना हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी अफ्रीका में खराब दवाएं भेज रहा है जहां वे शायद ही कभी पकड़ी जाएगी। आखिरकार वह नौकरी छोड़ देता है और जानते हुए भी वह एक बड़ा अपने ऊपर जोखिम उठा रहा है, वह सारी बात अपनी एफडीओ को बता देता है। Drug work as intended, and do you have the confidence that the drug works as it is intended to do? but the confidence would largely have to be based on the quality of the data. Oh, absolutely. And without the data? You don't know. You don't know. Taka reported his findings to the FDA in 2005. Their investigation found आखिर एफडीए क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। एफडीए ने 2008 में नई दिल्ली में भारत कार्यालय खोला ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले खाद्य एवं दवाइयाँ उत्पाद रूप से सुरक्षित हो और एवं अच्छी क्वालिटी के हो। Involves the company
pleading guilty to 3 felony counts for defrauding the United States. But the FDA has escaped much of the blame. Had the Food and Drug Administration done its job properly, I don't believe that the United States would be in the midst of an epidemic of opioid addiction. ठाकुर की कहानी चौंकाती है कि एक बुरी कंपनी कितनी भ्रष्ट हो सकती है। कैसे एक शांत किस्म का भ्रष्टाचार, इच्छा शक्ति और मिशन का क्षरण ने इस इंडस्ट्री को बेअसर कर दिया है। Pre-qualifications process, there is another world body that understands how drugs are made, what quality means, right? If we go through their certification process and they tell us that our drugs are of good quality, you should be okay with it, right? And so the WHO had sent 2 inspectors, Dr. Andre Vanziel and Dr. Olivier Leblaye. They had come to inspect, what kind of patient data was being generated to ensure that these drugs were bioequivalent. So this is a technical term. What this means is that when drugs are first sort of, introduced into the market, the company that actually makes it for the first time, which is called an innovator company because they innovate around this, right? They go through a thorough process, a clinical process of establishing that these drugs are, effective in the patient population that they're being used. The standards that the US had set out at that point in time basically said that as a generic manufacturer, you don't have to repeat all of those studies because they're very, very expensive. What you do need to do is, in a small group of healthy volunteers, if you can replicate the way that this drug works, right, compared to the innovator drug, then we are fairly confident that you know what you're doing. So these 2 inspectors had come to work, to inspect the process. So they had gone to this lab that Ranbaxy was using at that point called Vimta Laboratories. It was based in Hyderabad at that point in time. And what they found was that while the Ranbaxy had submitted data saying that we have tested it on 95 patients, they actually were only 2 patients. They copied and pasted all that data of 2 patients over and over again to say that, hey, look, we have tested it on this cohort of 95 patients. The US was going to send these drugs to African countries. South Africa was one of the countries that was going to receive that. So the MCC, the South African regulator, basically highlighted that and said, look, there's a problem here. We don't believe that you're doing it adequately enough for you to be able to tell us that these drugs are of good quality. So Raj, who was 2 months into his job at that point in time, was told, you need to go talk to these people in Johannesburg, in South Africa, and assure them that don't worry, we have it under control. So he did go, along with the person who was heading the clinical piece in the company. And on the way back, Raj was told by this person that, look, what you're doing here is not limited just to these HIV drugs. So Raj asked him, well, what do you mean by that? Right? What do you mean by, it's not limited? He said, well, it's a lot more pervasive. So when he got back to India, that was the first time that he called me up and said, I need to know the true extent of this problem. So could you explain how Ranbaxy actually succeeded in fooling the FDA inspectors for so long? Well, I think that the book actually goes into quite a bit of detail to try and, in contemporary, situation right now when you're talking about strides, when you're talking about US-based myelin in the way that they would just unplug the computers while it's running to create a crash and then sort of use that data to fool the inspectors. You can get really fanciful about these things, If you want to beat the system, there are 100 different ways of doing that. I saw with my own eyes the steam room where, the FDA inspector would say, I want to see this document, and you would say, well, that's in that other building over there. Can we get it for you tomorrow? And the person would say, fine. And all night, people would stay up, write these documents, and they had a room that actually steam in it. So you put the thing in the steam room and then bring it out the next morning. It looked like an old document. Now, this conversation that you had with an assistant, where you asked what percentage of the dossier submitted to regulators contained data that did not match what the company had on file. Right. And it says in the book the assistant was evasive. It varies from region to region. So you asked him give me an estimate in each region. How about
in the United States, and the assistant thought for a moment and he said perhaps between 50 or 60%. Correct. Ranbaxy had faked over half its dossiers to the FDA. That's correct. And that was one of the better regions. Correct.